Class on Monday, I'll take up natural resources. But today we shall complete this. So I'll anyway allow all of you to start. You can start your video anytime. I would like it if all of you keep it open only, but none of you like to keep the video on, so what do I do? So this will be assignment number 64. I have a video here which I want to show you. This is from Kahn Academy, which explains it very nicely. We have been doing sound, right? What did we do in sound? What is it? How is the sound created? By the vibration of particles, right? So the oscillations. So that oscillation को और अच्छे से explain किया हुआ है in this video. What it means, what those oscillations means, what time frame, what time period means, what frequency means, what is the amplitude, what a wave means. So all that is being explained here. Okay? हमने oscillatory motion पहले भी किया है, तब भी हमने time period किया था, but I doubt all of you remember it. So we'll anyway go through this video and I think all of you will understand it better. Okay? Good, Asad. Asad, आप 6 बजे से पहले निकल जाओगे, right? कितने बजे पहुंचना होता है आपने नेक्स्ट ट्यूशन? कितने बजे पहुंचना होता है नेक्स्ट ट्यूशन पे? कहाँ पे है? कितनी दूर है? कितनी दूर है ट्यूशन? कितना टाइम लगता है? अच्छा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में पहुंच जाते हो. ओके, गुड. सो 5 to 6 you should leave the class then. Okay, so let's watch this video. This is what a sound wave sounds like, but what does a sound wave look like? Well, the air through which the sound wave is traveling looks something like this. But if you want another visual representation of the sound, we can hook this speaker up to an oscilloscope and it gives us this graph. We say that this shape represents the sound wave because So this is the shape that the sound wave has. वाइब्रेट ऐसे ऐसे हो रही हैं, मगर जब हम इसको कनेक्ट करके एक पिक्चर लेते हैं, ऑसिलोस्कोप बोलते हैं उसको. So कैसी वेव नजर आती है हमको? ऐसे ऐसे. दिस इज द शेप. अब वो कैसे हो रहा है, ये शेप क्यों नजर आ रही है, जबकि हमारे साउंड मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं. ऑसिलेटरी मोशन हो रही है. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑसिलेशन, इधर गया फिर इधर आया है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में वापस पहुंच रहा है, राइट? सो इट इज मूविंग लाइक दिस, बट हमारा जो वेव आ रही है वो ऐसे पता चल रही है. तो ये वेव किस चीज की है ऐसी? दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स listen to what sir is explaining. because if we focus on a single molecule of air, we see that it moves back and forth just like a sine or cosine graph. The horizontal. तो अभी देखो कैसे मूव हो रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे. सो अब इस वेव को इसके ये ऐसे 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 मूव हो रहा है, राइट? अब इसी को उन्होंने दे हैव इन्वर्टेड इट लाइक दिस. तो ये हमारी वेव बन रही है. बेसिकली दिस इज द वेव दैट इज गेटिंग मेड, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन अ लाइक यू रोटेट पिक्चर्स, राइट? कभी टेढ़ी पिक्चर होती है ऐसे, आई कांट रीड इट, आई हैव टू टर्न माई हेड, सो देन यू रोटेट इट बैक, देन इट बिकम्स स्ट्रेट. सो सिमिलरली दिस इज गेटिंग रोटेटेड. अंडरस्टूड? Yes, Yukti? Are you there, Yukti? Is she there or has she just logged in? Yukti, are you there in the class? Switch on your video. Anjali, you also switch on. Yukti, I think, has just logged in and she's gone somewhere. Good. Keep it logged, switched on only.
Yukti, are you there? Doesn't look like. आप लोगों को लगता है यू कैन फूल मैम, पर मैम को फूल नहीं कर सकते. मैम को पता चल जाता है कब बैठे होते हो कब नहीं बैठे होते. Okay, so let's watch the video further. Fourth, just like a sine or cosine graph, the horizontal axis here represents time, and the तो अब ये इसको रोटेट, ये जो है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये क्या है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? यस, पहले कौन आया था? असद. व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट? अरे अभी बोला उसने. लिसन टू इट अगेन, लिसन अगेन. वाइब्रेशन तो हो ही रही है, पर अगेंस्ट व्हाट? See again. if we focus on a single molecule of air, we see that it moves back. So what are we focusing on? On the molecules of air. क्योंकि एयर के थ्रू ही ट्रांसमिट हो रहा है साउंड, राइट? निकल कहीं से रहा है मगर इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड थ्रू. तो वाइब्रेट क्या कर रही है? एयर कर रही है, राइट? हाँ, तो अब एयर को देखो कैसे, तो उसकी वाइब्रेशन ही साउंड वेव है. उसी वाइब्रेशन से जितना वो वाइब्रेट कर रही है वो एक वेव बना रही है जो आगे आगे जा रही है. नाउ सी अगेन. Back and forth, just like a sine or cosine graph. The horizontal axis here represents time, and the तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम. तो कितनी देर में कहाँ पहुंचेगा मॉलिक्यूल, राइट? सो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम. चलो लिखो ये डेट आज की. कम ऑन क्विकली. 07/02/24. We are doing sound. And then now what are we saying? अब हम एक x एक्सिस बनाएंगे, एक y एक्सिस. तो x एक्सिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टाइम. यहाँ पे हमारे क्या है? एयर के मॉलिक्यूल्स, राइट? तो ये एयर का मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है, तो वो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे. तो ये मॉलिक्यूल है. ये यहाँ पे तो ये टाइम बता रहा है कि कौन से टाइम पे ये कहाँ पहुंचा. तो ये हमारी तो ये हमारी पूरी ऐसे वेव बन रही है, ओके? और ये है जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट कर रहा है. कितना ऊपर जा रहा है, फिर कितना नीचे जा रहा है. वो जब हिलेगा तो कहीं आगे पीछे ही अगर जा रहा है तो आगे कितना जा रहा है, पीछे कितना जा रहा है. ऑसिलेशन बन रही है. तो वो कितना जा रहा है उसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को. Okay? The vertical axis can be thought of as representing the displacement of that air molecule as it oscillates back and forth. Okay. तो अब क्या हो रहा है? ये मॉलिक्यूल जो है वो बैक एंड फोर्थ यहाँ पे जा रहा है. ये इसने हमको क्या बताया कि कितना ऊपर गया, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर गया. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया. ओके? और इस वाले पे क्या है कि किस टाइम पे कितना ऊपर गया था, किस टाइम पे कितना नीचे गया, राइट? ये समझ आ गया? अंडरस्टूड और नॉट? यस. ओके. व्हाट अबाउट यू युक्ति? हाँ, युक्ति आप हो? युक्ति, आर यू देयर और नॉट? लेट मी कॉल हर. Why is she sitting in the class if she doesn't want to attend? Let me call her. Because I keep asking her otherwise. अगर उसको नहीं है तो कोई बात नहीं. Let her not be there. But I feel okay. तो अब ये displace. Where are you? Why aren't you answering me? What are you doing? Are you attending the class or not attending? No, but you're not answering me. I have been asking you questions. You're not answering. You're not switching on your video. What happened? Ah, okay. And answer also when I'm asking something.
सो आगे देखते हैं. स्विच ऑन योर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. हाँ, कम ऑन क्विक. सो नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. अब एयर कितनी, जब हमारी वाइब्रेशन हो रही है तो एयर कितनी ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही है इक्विलिब्रियम से, वो होती है डिस्प्लेसमेंट. कितनी हिल गई अपनी जगह से एयर. The center line here represents the equilibrium position or undisturbed position of that air molecule. If we सो इक्विलिब्रियम पोजिशन क्या होती है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन? यस अंजलि, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन? अभी हमारे, अगर मैं बोल नहीं रही हूं तो एयर में सब मॉलिक्यूल्स आराम से बैठे. मैंने बोलना शुरू किया, एयर मैंने धक्का मारा उसको तो वो हिल गया अपनी जगह से, फिर वापस आया, फिर क्या आ गया, वापस आ. तो जिधर वो आराम से बैठा है, व्हेन आई एम नॉट स्पीकिंग, undisturbed position is called the equilibrium position. When it is not disturbed by anything. It's not only my sound, it could be the sound of this tuck. Okay? किसी भी चीज से, कोई भी मॉलिक्यूल को जब हमने तंग किया तो वो हिल गया अपनी जगह से. जब तक नहीं हिला, it is in the equilibrium or the undisturbed position. Okay? Understood? Yes, I said that's understood. Okay, good. turn up the volume, we see that the oscillations become larger and the sound becomes louder. See, जब हमने वॉल्यूम बढ़ाई तो क्या है, साउंड लाउड हो रहा है. हम बोलते हैं ना वॉल्यूम बढ़ा, सो साउंड लाउड हो रहा है. साउंड जब लाउड हो रहा है, ऑसिलेशंस जो है, हिलना जो है वो ज्यादा हो गया और तेज तेज हिलने लगा. जितना हम जोर से बोलेंगे उतना ज्यादा, नेचुरली, बिकॉज फोर्स ज्यादा लग रहा है. जब मैं बोल रही हूँ, मैं हल्के से बोल रही हूँ, हेलो कैन यू हियर मी, तो वो हल्के से ही मूव होएगा, तुम्हें सुनाई भी कम देगा. हेलो, सो आई एम पुटिंग मोर फोर्स, सो इट विल मूव फास्टर. The maximum displacement of the air molecule from its undisturbed position is called the amplitude. So, अब फर्स्ट टर्म हमारी आ गई. सो जो अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन है या जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहां से मैक्सिमम जितना, वो मैक्सिमम ऊपर तक जितना गया, टोटल ऊपर तक कितना गया, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. क्या बोलते हैं? हाँ, अभी मैं दोबारा से ये वाला फिगर थोड़ा ठीक से नीटली बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए. ओके, अब ये टाइम है, ठीक है. ये सपोजिंग हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. किसी और कलर से बनाती हूँ, या चलो इधर ही बनाती हूँ. अभी अब मेरी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यहां से ये मॉलिक्यूल इधर तक गया, फिर ये नीचे आया इधर तक, फिर ये इतना ऊपर गया, फिर ये इतना ही नीचे आया. ऑसिलेशंस में हमने ऑसिलेटरी मोशन में देखा ना, उतनी डिस्प्लेसमेंट होती है. ये वाली चीज जो है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि इस पे क्या हम बता रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट ही बता रहे हैं ना. ये वाला वाई एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस में हमने बोला टाइम है और वाई एक्सिस में हमने बोला डिस्प्लेसमेंट है. तो अब ये वाला जो है मॉलिक्यूल मैक्सिमम यहां तक डिस्प्लेस हुआ है. सो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. व्हाट इज इट कॉल्ड? मैक्सिमम. हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. मैक्सिमम, जितना सबसे ज्यादा. हम पहले ऑसिलेटरी मोशन में हम क्या कह रहे थे, इस तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई है या इस तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई है. यहाँ पे हम एक्स और वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट. इसी डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं. पार्टिकल तो ऐसे ही मूव हो रहा है, मगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम ये पाइप पे दिखा रहे हैं. तो इसको बोलते हैं, जितना सबसे ज्यादा वो होता है, तेज होएगी फोर्स विद विच इट इज मूविंग, है ना. सो अब एम्पलीट्यूड क्या होता है?
Amplitude. Yes, Yukti, can you tell me what is amplitude? Tell me. Yes, ma'am. Tell me. Ma'am, we disturb the equilibrium position is called amplitude. No, that is called displacement. But maximum displacement of molecules from the equilibrium position. Okay? Maximum displacement is called the amplitude. Okay, now let's go ahead. Be careful, the amplitude is not the length of the entire displacement, it's only the maximum displacement measured from the equilibrium position. So, if you really look at it, so it is maximum. यहाँ पे maximum. So, in the positive direction also it is maximum, in the negative direction also it is. So, this will be negative because in oscillatory motion, left to right, so one is represented as a positive displacement, the other is represented as the negative displacement, but the displacement above and below will be the same. That much we know from the oscillatory motion, right? Yes? Yes? मालूम है ना ये or no? Yes, ma'am. Yes? Another key idea is the period of a sound wave. The period is defined to be the time it takes for an air molecule to fully move back and forth one time. We call this back and forth motion a cycle. We measure the period in seconds. Okay, so that much also we know from the oscillatory motion, that it goes to and fro and comes back to the equilibrium position, to the middle. So the time it takes for one complete cycle, that is called, what is it called, Asad? Period. Period. What is a period? Tell me, I'll write it down. The time taken to complete one cycle, which means what? वो ऊपर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. इट इज मेजर्ड. टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? हाँ, measured in seconds. Okay, good. Okay, now Anjali has to be ready. So the period is the number of seconds it takes for one cycle. We use the letter capital T to represent the. Okay. एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल ए यूज करते हैं और पीरियड टू कंप्लीट वन फुल, तो इसने ये टी बताया, ये पीरियड है. कैसे ये पीरियड है? हम इतना भी ये भी ये ले सकते हैं. अगर हम इधर इक्विलिब्रियम मान रहे हैं तो यहां से यहां तक वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए कैसे? ऊपर गया, वापस आके यहाँ पे आया. तो ये पूरा इन दोनों एम्पलीट्यूड्स के बीच का पीरियड जो है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच का पीरियड है, उसको हम बोलते हैं टी, टाइम पीरियड, रिप्रेजेंटेड बाय. तो ए से हम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम पीरियड है ये, तो टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज ए एंड दिस इज टी. Okay?
period. If we decrease the period, the time it takes for the air molecules to oscillate back and forth decreases, and the note or the pitch of the sound changes. The less time it takes the air molecules to oscillate back and forth, the higher note that we perceive. An idea. अच्छा, अब मेरे को बताओ क्या हो रहा है अंजलि? अगर हमारा वो टाइम पीरियड कम हो रहा है तो हमारी ऑसिलेशन बढ़ेगी या कम, वाइब्रेशन कम होएगी कि बढ़ेगी? बताओ। अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो ऑसिलेशंस जो हैं वो ज्यादा होंगी कि कम होंगी? बोलो। हाँ बोलो असद, बोलो। टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। नहीं, ऑसिलेशंस अगर ज्यादा तेज चल रहे हैं, अगर ज्यादा तेज चल रहे हैं तो साउंड तो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ना? तो साउंड इज इंक्रीजिंग, पर टाइम तो एक बार ही कंप्लीट। तेज जब जा रहा है तो वो उतनी जो ऑसिलेशन है वो कम टाइम में हो रही है, फास्टर हो रहा है, राइट? जल्दी हो रहा है ना? this, राइट? अभी मैं ऐसे कर रही हूँ, ये देखो आराम से चल रहा है, राइट? ये दिख रहा है ना? तो अब जब मैंने इसको तेज कर दिया वो उधर ही जा रहा है, मगर ये फास्टर वापस आ रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कम टाइम में ज्यादा बार वो आगे पीछे हो रहा है। ये समझ आया? अंजलि आपको समझ आया? युक्ति, डिड यू अंडरस्टैंड या नहीं आया? अंजलि, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अंजलि? नो? अंजलि, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? जवाब ही नहीं दे रही है। व्हाट आर यू डूइंग अंजलि? अंजलि, are you there or not? I think she has a problem with the net. Okay, let's go ahead. कभी कोई बच्चा तंग करता है, कभी कोई, and कभी कोई आता है, कभी कोई. Great. Yeah, intimately related to the period is called the frequency. Frequency is defined to be 1 over the period. So since the period is the number of seconds per oscillation, the frequency is the number of oscillations. So frequency का क्या मतलब है? पहले ये बता कि कितनी तेजी से कोई चीज चल रही है। टाइम पीरियड तो है कितने टाइम में, बट कितना फास्ट या स्लो चल रहा है वो फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो नोट दिस डाउन। सो पीरियड इज नंबर ऑफ सेकेंड्स पर ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड्स में कंप्लीट हो रही है, और क्योंकि टाइम पीरियड है इसलिए सेकेंड्स में उसको हम लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही। तो पीरियड और फ्रीक्वेंसी उल्टा है एक दूसरे से। ये समझ आई बात? पक्का? युक्ति, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो नोट इट डाउन। So time period, maximum हम बोल रहे हैं, the time taken to complete one cycle. So what is the time period? It is number of seconds, because it time है तो seconds में होगा. So number of seconds per oscillation. Per oscillation means one cycle. Per oscillation. Hello. Yeah. Yes, Yukti, tell me. I had lost the network connection somehow. Yeah. Ma'am, number of time. Number of oscillation. Number of time it moves, which is called what? Number of oscillation. Huh. Per, in 1 second, how many oscillations take place? Huh. So T is equal to 1 upon F, or I think F we represent with a small f only.
और f is equal to 1 upon t. उल्टा है ना, these are reverse. Seconds and oscillations की बात हो रही है, but time is number of seconds and frequency is number of oscillations in 1 second. So it could complete one oscillation in 1 second, it could complete it in 2 seconds, it could complete it in 10 seconds, whatever. But frequency is number of oscillations in 1 second. So it could complete 10 oscillations in 1 second, 10 per second. Or 100 per second, it could be anything. Note down the units also. The units also give us an idea about the definition of things. Okay. Per second. Chalo, Anjali, your turn now. 1 over seconds, and we call 1 over a second a hertz. Typical sounds have frequency. So, 1 over second is what? Hertz. So 1 over second. This is called hertz. And hertz is the unit of sound. When we write it as Hz. Very good. Okay. Frequencies in the hundreds or even thousands of hertz. For instance, this note, which is an A note, is causing air to oscillate back and forth 440 times per second. So सा जब आप दबाते हो एक A नोट पे, उसका हायर पिच भी होता है, तो 440 साइकिल्स पर सेकंड, इतना तेज, एक सेकंड में 440 टाइम्स वो मूव करता है जब आप सपोजिंग हारमोनियम बजा रहे हो. Now listen. The frequency of this A note is 440 hertz. Higher notes have higher frequencies and lower notes have lower frequencies. Humans can hear frequencies as low as about 20 hertz. Okay, so this you should know. So human beings, हम कौन सी frequency का sound सुन सकते हैं? Starting from 20 hertz to, listen to it. And as high as about 20,000 hertz. Okay. Fine. So, what is the range? Range of hertz, range of frequency that humans can hear. Tell me, Asad. 20 hertz to 2000 hertz. Is 20 hertz to 20,000. 20,000 I think. 20,000 hertz. तुम सोचो कितनी तेज वाइब्रेशन हो रही है, एक सेकंड में 20,000 बार वाइब्रेट हो रहा है. सो दैट मच वी कैन हेयर. उससे ज्यादा अगर साउंड होएगा हमारे कान उसको नहीं पकड़ सकते. वी विल नॉट बी एबल टू हेयर इट. ओके. But there are other animals who can hear higher frequencies also. Let's hear. But if a speaker were to oscillate air back and forth more than about 20,000 times per second, it would create sound waves, but we wouldn't be able to hear them. For instance, this speaker is still playing a note, but we can't hear it right now. So it is Dogs more than... could hear this note though. Dogs can hear frequencies up to at least 40,000 hertz. Another key So 40,000 hertz tak, who can hear frequencies up to 40,000 hertz? No. Yeah. So have you noticed when it is Diwali or something, when we burst crackers, there is so much noise all over the place and the dogs get really disturbed. हमारा तो 20,000 तक हमने सुना and then we are fine. That also we find a lot. But dogs can hear even more. So very often you see that dogs then they enter rooms and they hide inside so that the sound becomes lesser for them.
So dogs can hear up to 40,000 hertz. The idea in sound waves is the wavelength of the sound wave. The idea of a wavelength is that when this sound is traveling through a region of air, the air molecules will be compressed close together in some regions and spread far apart from each other in other regions. If you find the distance between two compressed regions, that would be the wavelength of that sound wave. Okay, so अब हम क्या कह रहे हैं? Compressed air के बीच में क्या है? दो जब उसको वाइब्रेट हो रहा है, उसने आगे धक्का दिया, वो वापस आया, तो कहीं पे वो डीकम्प्रेस्ड है एयर, कहीं पे ज्यादा कंप्रेस्ड है, इसीलिए तो ऐसे 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 हो रहा है ना, कभी नीचे कभी ऊपर. सो उसको हम बोलते हैं बिटवीन टू कंप्रेस्ड एयर. व्हाट डू वी कॉल इट, युक्ति? व्हाट इज दैट कॉल्ड? व्हाट इज दैट कॉल्ड? द distance between the compressed airs portion. Somewhere it is compressed, somewhere it is decompressed. So compressed air ka, what is that called? Because this that is called a wavelength. Okay, and we represent it by this sign, this teda sa T and a danda. This is called lambda. What is it called? Lambda. Lambda. So what is wavelength? Now Yukti will tell me. Wavelength is lambda. Like this we represent it. The gap between the compressed air. Between Compressed air is known as wavelength. Compressed molecules of air. Okay. The wavelength is the distance, we measure it in meters. Be careful, people get wavelength and period mixed up all the time. So period is in time, wavelength is in, it is the distance between them. So it will be in meters. So ये समझ में आया ना? So the unit is the unit क्योंकि वो distance है, the distance. So distance तो मीटर में ही होता है. और time period में क्या होता है? Time period तो seconds होता है. That is the time. So don't get. अब क्या होता है? ये टेढ़ा T दिखता है और ये T है. So this is the time period, this is lambda, the wavelength. So don't confuse lambda and T. Okay? ये ध्यान रखना, अभी से बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए आप लोगों को. Period of a sound wave is the time it takes for an air molecule to oscillate back and forth one time. The wavelength of a sound wave is the distance between two compressed regions of air. People get these mixed up because there's an alternate way to create a graph of this sound wave. Consider this, before the wave moves through the air, each air molecule has some undisturbed position from the speaker that we can measure in meters. This number represents the equilibrium undisturbed position of that air molecule. Then, as the sound wave passes by, the air molecules get displaced slightly from that position. So an alternate graph that we could make would be the displacement of the air molecule versus the undisturbed position or equilibrium position of that air molecule. This graph would let us know, for a particular moment in time, how displaced is that air molecule at that particular position in space. This graph shows us that in some regions the air is displaced a lot from its equilibrium position, and in other regions the air is not displaced much at all from its equilibrium position. So compressed जो होगी, that is not displaced too much. Uncompressed में it is displaced. The molecules are displaced a lot. And when it is compressed, it is not displaced that much from its equilibrium position. Can you understand this graph? ये समझ आ रहा है ग्राफ? नो, ओके, तो मैं समझाती हूँ. अभी हमारा ये क्या है, थोड़ा सा पीछे जाके समझाती हूँ, उससे और क्लियर होएगा. युक्ति, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Little. Little. So I'll just explain it a little more.
Okay. So now what is happening here? We can see this is the displacement, right? That we have seen of the air, which we said that we saw the amplitude and in whatever time frame how much oscillation is taking. But now supposing this is the equilibrium position, this line represents the equilibrium position of a molecule. So all these molecules have their own equilibrium position, सबके अपनी अपनी जगह है, right? तो जब ये डिस्प्लेस हो रहा है मॉलिक्यूल, जब डिस्प्लेस हो रहा है तो कितना डिस्प्लेस हो रहा है? कोई मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, कोई कम हो रहा है. ये इस मॉलिक्यूल की भी जो ये कंप्रेस्ड दिखाए हैं, इनकी भी अपनी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. वो ज्यादा नहीं मूव हो रहा है, पर ये वाला मॉलिक्यूल जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज्यादा मूव हो रहा है. तभी यहाँ पे डीकम्प्रेस्ड है, यहाँ पे ज्यादा कंप्रेस्ड नहीं है. जहाँ पे बहुत कम मूव हो रहा है वहां पे कंप्रेस्ड है. ये समझ आ गया? Now you've understood this? So the displacement is lesser in the compressed air. Displacement is more here. So now let's listen to this again. Okay? At the moment in time, how displaced is that air molecule at that particular position in space? This graph shows us that in some regions the air is displaced a lot from its equilibrium position, and in other regions the air is not displaced much at all. देखो अब एयर भी जो डिस्प्लेस हो रही है, यहाँ पे कम डिस्प्लेस हो रही है, यहाँ पे ज्यादा. तो मैक्सिमम डिस्प्लेस जो हो रही है उसको वी नो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. दैट वी ऑलरेडी नो. बट इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड हियर ऑल्सो. देन हियर इट इज स्टिल मोर, हियर more, and then maximum here. Then again it is getting displaced lesser. Fine? ये तो समझ आ गया ना? Understood? इतना तो समझ आ गया? Yeah. Okay. So we'll just finish it up quickly now. Then I'm sure you'll be able to do all the questions and answers also, which you can do All yourself. from its equilibrium position. For this kind of graph, the distance between peaks represents the wavelength of the sound wave, not the period, because it would be measuring the distance between compressed regions in space. So be careful. For a sound wave, a displacement versus time graph represents what that particular air molecule is doing as a function of time. And on this type of graph, the interval between peaks represents the period of the wave. But a displacement versus position graph represents a snapshot of the displacement of all the air molecules along that wave at a particular instant of time. And on this type of graph, the interval between peaks represents the wavelength. So now that is why you can get confused. Right? So abhi hum, when we are talking about the distance between these compressed molecules, so in peaks ke beech ka time, that is called wavelength. So that is represented in meters. But in the previous graph, what were we showing? The time period, the time we were. So this is location. On the x-axis is the location, and this is the displacement. And in the time period graph, the x-axis was time, and this was the displacement. So in a graph which has t and displacement, when we look at the same wave dikh rahi hai. So this will represent the time period t. But in a displacement graph where we are measuring the distance, so this is distance between compressed air, that will represent the wavelength in meters. This will be in seconds, this will be in meters. I hope you've understood this. ठीक से समझ आया ये? पक्का अंजलि समझ आ गया ना? Good. So, very good. So this is all that I wanted to explain today. So that अच्छे से clarity हो, time period क्या होता है, wavelength क्या होती है, frequency क्या होती है, and amplitude क्या होता है. I hope अब ये सब चीजें लिखोगे आप लोग, okay? In your notebooks, understand them. That's all, okay? And that is what was left in your chapter also, Yukti. So I have explained it. Now I'm sure you'll be able to do the questions and answers. If you are not able to do, then you can ask me. Fine?